लोग CMRI मतलब CK बिरला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से आ रहे हैं और वहाँ पर एक रीनल साइंस डिपार्टमेंट पूरी जस्ट फोकसिंग ऑन किडनी पर इस्टेब्लिश हुआ है। और ये रीनल साइंस का अंदर में आपका किडनी नेफ्रो मेडिकल पार्ट भी है, सर्जिकल पार्ट भी है। इसका पूरा लीड डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्ती कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्ती हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद किडनी ट्रांसप्लांट, बच्चों के भी एडल्ट के भी। वे अमेरिका में ही थे कंसल्टेंट में 20-30 साल थे। उसके बाद जस्ट 2 साल हुआ है कलकत्ता लौटे। अस्पताल का इच्छा है कि दैट किडनी ट्रांसप्लांट एज सच और पीडियाट्रिक किडनी के ट्रांसप्लांट मतलब बच्चों के किडनी ट्रांसप्लांट को प्रमोट किया जाए। और हम लोग आसपास के जहाँ हम लोग का ड्रेनेज एरिया है वहाँ पर हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ बंगाल हुआ, सिक्किम हुआ, भूटान, बांग्लादेश, ये सब में। और सिक्किम गवर्नमेंट के साथ में ये लोग टाइप करने का कोशिश में है। वर्चुअली 99% वर्क हो गया है। तो हम आशा कर रहे हैं कि दैट सिक्किम में अगर कोई भी बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो, जो इस मोमेंट सिक्किम में नहीं होता है, तो वे लोग के लिए कलकत्ता जाना इज़ मोर इजी देन साउथ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया ये सब जाना। तो यही मकसद है। आप लोग का ये ब्रांच कहाँ पर है? कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। अच्छा। पर हम लोग का एक इंफॉर्मेशन सेंटर सिलीगुड़ी में भी है। एक किडनी ट्रांसप्लांट करने में कितना कॉस्ट आता है सर? जैसे कि आप बोले शुरू में बोल रहे थे ना कि जो 6.5 के 7 के आसपास में होता है, बट फाइनेंस इज़ नॉट ए इशू फॉर 2 कारण से। एक कारण क्या है कि आजकल बहुत डोनर है। लाइक जस्ट लास्ट वीक ही हम लोग का एक बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में भी हैं, जो कलकत्ता में ट्रस्ट हॉस्पिटल है। तो इट वॉज कम्प्लीटली फंडेड बाई NGO। पूरा 7.5 लाख 8 लाख रुपये का बिल हुआ, सब फंडेड बाई NGO। एंड सेकेंडली है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि सिक्किम गवर्नमेंट का हम लोग ये ले लेंगे ना, जो स्कीम है, सो फाइनेंस विल नॉट बी एन इशू। अगर यहाँ से कोई किसी बच्चे का अथवा किसी का भी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़े तो क्या फ्री कॉस्ट में होगा सर? हाँ, अगर गवर्नमेंट स्कीम में हो जाएगा तो फ्री कॉस्ट में होगा। और अगर गवर्नमेंट स्कीम में नहीं है, पर अगर इंडियन हो, जो कि ऑब्वियसली इंडियन होगा, तो हम लोग का अस्पताल में NGO है जो सपोर्ट करेंगे। इसके लिए CMRI हॉस्पिटल सिक्किम में कोई मेडिकल कैंप करने की प्लान में है सर? वे भी है कि STM बोल के आप लोग का जो बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर ही हम लोग का प्लान है कि दैट एटलीस्ट 1-2 महीना का ऑल्टरनेट में हम लोग का किडनी रिलेटेड कैंप करेंगे। Isn't if you see the booklet we have given you, that even contains the packages that is there we are following in CMRI. So that is the lowest package we are offering for in entire West Bengal. That is only because the CMRI is a trust hospital and they absolutely support it to the maximum way they can. And on top of that, we have NGOs supporting for financial aid, especially for the pediatric patients who are generally having a finance problem, as you have mentioned. So it is well taken care of even by the NGOs as well as the hospital administration. For the Sikkim people, like we are hoping that it will be through the Sikkim government, no? So that shouldn't be an issue for the people of Sikkim, and that is very lucky. You people have this scheme. I want to add to this only one point. People consider finance while doing a transplant. Basically, because here the money is spent in a one time. People becomes basically a little bit agitated. Why will get the money like that? But a patient who is on dialysis generally spends more than the patient on a transplant, successful transplant, because here the money is not spent at one time. It's cumulatively spent. And if you consider an average a successful transplant, it costs around 6.5 to 7 lakhs. But if you consider a patient, average lifespan on a patient on dialysis around 7 years, around 7 years only, whereas in transplant 17 years. So if you consider 7 years of continuous 3 per week dialysis, which is generally advised, it costs around more than 15 lakhs. So basically, what they say is a one-time cost. But averaging, if you consider in totality, dialysis is more expensive than transplant.
in order to add to that, as he mentioned, we need to consider the quality of life. The quality of life is absolutely changed. A person on dialysis having an access problem, multiple admissions to ICU because of chest complications, cardiac complications. The dialysis machine cannot emulate the functions of the kidney. And once they get a kidney transplant, they become more productive and their quality of life is much better. The average lifespan of a person, adult, on dialysis is around about 5 years. An average lifespan of a person who gets a kidney transplant is 3.5 times more. So a person who is 50 years old, on dialysis, expected death at the age of 55. If he gets a transplant, he's going to live the normal span of life. Average Indian lives about 60-65 years. Maybe my 5 years, 10 years will be lost. But if a child gets a kidney failure, a large bulk of years are lost. A large bulk of productivity is lost. And that's why it is very important to do a kidney transplant, because kidney transplant has been shown to be the only way possible in which we can ensure a child long-term better survival. So this is often we have been asked by parents also, by other, do children really need a kidney transplant? Why not better to wait till the child is say 15-20 years? That's an absolute no-no, because that way you are damaging the various organs that you have in the child. Growth is damaged, psychologically the child is hampered. So the earlier the child gets a kidney transplant, provided he or she is in the advanced stage of CKD, chronic kidney disease, the best. As Dr. Sinha said, they have been able to make calculations that a child, how much productive he or she is for the country. They have done that in the United States, and each child in the United States has an average production or a profit to the nation of around about $3 million. Whether he's a truck driver or he's a rocket scientist, the amount differs. But if you take an average, every child is productive to the nation. So that's why in the United States, a kidney that is available is first offered to a child waiting on the list. So that is something that we will probably emulate later on. As Dr. Sinha said, the child getting a kidney is of paramount importance. लोग ने सुना है, उन लोगों ने जो बोला है, ईस्टर्न इंडिया में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट लाइक डॉक्टर राजीव सिन्हा, nobody has this pediatric transplant even unit in even NH चाहिए, अपोलो चाहिए, और किसी भी हॉस्पिटल में जाइए in Calcutta, in Eastern India, I'm telling, the facility is not there. We are the only hospital, I'm very proud to say, we have this team, and this team is only in CMRI to this kind of critical kidney, adult and pediatric transplant there. Even in other hospitals like Rabindranath Tagore and all, where there is a failure, so before going to CMC Vellore or Indraprastha Apollo or Apollo Chennai, they come to us and they refer and take consultation with them before going there. So this is the hospital where you can get a treatment exactly in a much economical cost, because we are non-profit hospital there. So that is the thing, and again I just like to thank you all, really grateful.